मेरे मित्रों, उमर अब्दुल्ला जी, सभी मित्रों, परिवर्तन के लिए स्वायत्तता जरूरी है। राज्यों के लिए और अधिक स्वायत्तता चाहिए, लेकिन इसके पहले निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि मजबूत केंद्र की भी आवश्यकता है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, स्थिरता के लिए, समृद्धि और विकास के लिए। और इसलिए मैं हर वैसे प्रावधान का विरोधी हूं जो राज्य की एकता को, अखंडता को, स्थिरता को कमजोर करता हो। आर्टिकल 370 जैसे जितने विषय है, मैं घोर विरोधी उनका रहा हूं। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। लेकिन इसके साथ साथ केंद्र मजबूत तो हो। मजबूत केंद्र के साथ साथ राज्य इतने लाचार ना हो जाएं कि हर मामले पर वो केंद्र पर निर्भरता उनकी निर्भर रहें। और इसलिए मुख्यमंत्री रहते हुए व्यवहारिक रूप से जो मैंने महसूस किया है, विशेषकर जब से गठबंधन सरकारों को युग आया है, एक पार्टी की सरकार वो जमाने चले गए जब केंद्र में भी हुआ करती थी, राज्यों में भी हुआ करती थी, तब शायद शिकायतें इतनी ना हो। लेकिन हम सब जानते हैं कोalition गवर्नमेंट का जमाना है, केंद्र में भी गठबंधन की सरकारें आती। कई राज्य ऐसे हैं जहां गठबंधन की सरकारें बनती है। और ऐसे में अगर केंद्र के दिमाग में ये बात आ जाए कि विरोधी सरकार अगर किसी राज्य में है तो उसको मत दो सहायता, जितनी आवश्यक है उतनी मत दो। अगर अपनी है तो खूब दो। गठबंधन की है तो कई बार मजबूरी होती है, और मजबूरी का फायदा उठाते हुए कई राज्य सरकारों को हमने देखा है, वो उसकी भरपूर कीमत मांगते हैं और केंद्र सरकार कीमत हमेशा चुकाती है, उसकी चुकाते हुए हम लोगों ने देखा है। और इसलिए मैं ऐसे हर प्रावधान का विरोधी हूं कि जिसके कारण अब कई बार किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, कई बार उद्योगों को रियायतें, कई बार हमने जो केंद्र प्रवर्तित योजना है उनमें यह देखा है कि राज्यों को विशेष पैकेज दिए जाते हैं, एक राज्य को विशेष पैकेज। कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर कोई मंत्री किसी राज्य से आते हैं, रेल मंत्री अगर किसी राज्य के हैं, तो रेल की लाइनें वहां बिछेंगी, नई गाड़ियां वहां चलेगी, आमान परिवर्तन का काम वहां होगा। और दूसरा मध्य प्रदेश जैसा राज्य अगर मांग करेगा तो ये कह दिया जाएगा कि 50% पहले तुम दो, तब तुम्हारे यहाँ कोई रेलवे की लाइन डलेगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों विषय हैं जो ये बताते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि केंद्र कई बार राज्यों के साथ मनचाहा व्यवहार करता है। जहां तक विकास का सवाल है, डेवलपमेंट का सवाल है, मैं मानता हूं कि सरकारें हम दो उद्देश्य से ही बनाते हैं। राज्य की सरकारें, केंद्र सरकार की बात मैं नहीं कर रहा, एक विकास और दूसरा जनता का कल्याण। विकास सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और आम जनता के जीवन स्तर को हम कैसे उठाएं, इस बात का हम लगातार प्रयत्न करें। और दोनों दृष्टियों से जब हम देखते हैं तो अगर खर्च आप देखेंगे तो सड़क, बिजली, पानी के लिए राज्य सरकारों को खर्च करना पड़ता है। बहुत हद तक शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी राज्य सरकारें खर्च करती है। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे एक्साइज हो, इन सब पर एकाधिकार लगभग केंद्र सरकार का है। 2005 और 6 के आंकड़े मैंने निकाले थे, तो केंद्र सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो होता है 62% लगभग, और राज्य सरकारों के पास जो कलेक्शन के जो विषय बचते हैं उनमें केवल 38% करती थी। और जहाँ तक खर्च का सवाल है उसमें आप देखेंगे कि 61% खर्च करना पड़ता है राज्य सरकारों को, और केंद्र सरकार केवल खर्च करती है लगभग 39%। और इसलिए मेरी पहली केंद्र से अपेक्षा तो ये है कि जो केंद्रीय करों में राज्य का शेयर है उसको आप बढ़ा दीजिए, 30% के आसपास है, बढ़ा के 50% कर देना चाहिए। कई बार राज्य योजना, केंद्र योजनाएं बनाता है। अब हमारा देश एक तो है लेकिन विविधताओं भरा है, अलग अलग राज्य की आवश्यकताएं अलग हैं, अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, अलग अलग राज्यों के का वातावरण अलग है। उनको ध्यान में रखते हुए एक योजना यहाँ से केंद्र सरकार बना दे और फिर नागालैंड से लेके जम्मू कश्मीर और फिर गुजरात से लेके मध्य प्रदेश तक से कहे कि आप उसी फॉर्म में उनको लागू करो, कई बार बड़ी कठिनाई हो जाती है। इसलिए राज्यों को ये स्वायत्तता दी जानी चाहिए कि आप तो तय कर दीजिए, इरिगेशन के लिए इतना पैसा है, इस राज्य को इतना दिया जाएगा, वो अपनी इरिगेशन की स्कीम्स बनाए, कहाँ डैम बनने, कैसे बनने, वो राज्य तय करें, केंद्र तय करने का काम क्यों करे। और इसलिए ये स्वायत्तता राज्यों के पास, सोचने का तरीका राज्यों के पास हो कि राज्य अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से अपने राज्य की विकास की योजनाएं हर एक मामले में बनाए। जहां तक सवाल है केंद्र का, मैं भुक्तभोगी हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मन में आया तो राज्य को दिया, अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, कहावत मध्य प्रदेश में चलती है। हमको अगर लगेगा तो हम आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
अभी मध्य प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है, पानी नहीं गिरा, हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमारे बंद, हम नहीं बना पा रहे। लेकिन मैं तो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहा, तीसरा मुख्यमंत्री बना था मैं मध्य प्रदेश में। मेरे बाद पहले 2 मुख्यमंत्री हो चुके थे और तीसरे मुख्यमंत्री के नाते मैंने काम शुरू किया। तब तक चुनाव बहुत पास आ गए। चुनाव जब पास आते हैं तो सोचने की दृष्टि भी बदल जाती है। फिर कैसे राज्य का पैसा रोकें, कैसे राज्य को तकलीफ में लाएं, ये प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसने ये तय किया था कि 17.1 लाख मीट्रिक टन कोयला हमको हमारे थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए चाहिए, नहीं दिया गया। 11 लाख मीट्रिक टन केवल दिया गया। मैं 24 घंटे उपवास पे बैठा। एक अनएलोटेड कोटा है, ये क्यों होना चाहिए अनएलोटेड कोटा? कोई ना कोई फार्मूले के आधार पर चीज़ें बांटी जानी चाहिए। उनमें से हमको 382 मेगावाट 382 मेगावाट हमको जो बिजली मिलती थी वो एकदम काट ली गई। मैं उपवास पर बैठा, मैंने कोयला सत्याग्रह किया, मैंने कोयला मार्च निकाला। लेकिन अगर केंद्र सरकार तय कर ले कि नहीं देना तो नहीं देना, आपको जो लगे करते रहो। मध्य प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा, केंद्रीय दल भी गया, केंद्रीय मंत्रियों के साथ मेरी बातचीत की, केंद्रीय दल ने ये कहा कि स्थिति बहुत विस्फोटक है, खतरनाक है, लेकिन केंद्र को सहायता नहीं देनी थी तो नहीं दी। हम चक्कर लगा के परेशान हो गए। खाद्यान्न के वितरण का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। APL का गेहूं तमिलनाडु को दिया जाता है 2,40,000 मीट्रिक टन हर महीने, आंध्र प्रदेश को दिया जाता है 1,25,000 मीट्रिक टन हर महीने, और मध्य प्रदेश को दिया जाता है 26,000 मीट्रिक टन हर महीने। ये भेदभाव क्यों? केंद्र सरकार को जब जैसा समझ में आएगा तब वैसा फैसला करेंगे। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जो मैं गिना सकता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने वाले, मकोका, महाराष्ट्र में मकोका बन गया। मध्य प्रदेश ने 2 साल पहले आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा कानून बना के विधेयक पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा, हमको आज तक अनुमति नहीं मिली। अब ये दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड केंद्र को क्यों अपनाने चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि एक तो आर्थिक मामलों में राज्य के पास स्वायत्तता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च राज्य को करना पड़ता है। और इसलिए अगर कोई पैसा भी बांटा जाए तो एक फार्मूले के आधार पर बांटा जाए। हम राजा नहीं है कि मन में जहां महाराज प्रसन्न हो गए तो ज़्यादा दे देंगे, महाराज नाराज है तो नहीं देंगे। ये व्यवस्था राजतंत्र में कभी चल सकती थी, लोकतंत्र में व्यवस्था कैसे चल सकती है? कोई ना कोई एक फार्मूला होना चाहिए जिसके आधार पर सारी चीज़ें बांटी जानी चाहिए, और उसके कारण कोई भी अपनी मनमानी न कर पाए, भेदभाव न कर पाए, ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। उदाहरण मैं और अनेकों दे सकता हूं, लेकिन समय मुझको इसकी इजाजत नहीं देता। एक तो मेरा निवेदन ये है। दूसरा, मैं महामहिम राज्यपाल का पद, मैं सब राज्यपालों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि आज की जरूरत है क्या, आवश्यक है क्या? अगर आपको शपथ दिलाना है, मुख्यमंत्री को, मंत्रिमंडल को मुख्य न्यायाधीश दिला सकते हैं। अगर जनप्रतिनिधि चुने हुए बैठे हुए राज्य में और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री चुना है तो केंद्र के प्रतिनिधि की वहां क्यों जरूरत है? केंद्र का प्रतिनिधि वहां क्यों बैठे? मुझे तो सख्त इस पे आपत्ति, मुझे अपने राज्यपाल से शिकायत नहीं है, लेकिन अनावश्यक केंद्र एक अंकुश रखता है और उसके माध्यम से कई चीजें नियंत्रित करने का प्रयास करता है। मैं समझता हूं कि आज की आवश्यकता नहीं है। और एक निवेदन और, चूंकि ये ऐसा मंच है जो बहस को एक स्थान देता है, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में बात आती है और इसलिए विषय से हटके है, लेकिन मैं रखने का आग्रह, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। और वो ये कि हमारे देश में जो लगातार होने वाले चुनाव है वो विकास विरोधी हैं, वो विकास को रोकते हैं, वो वैमनस्य बढ़ाते हैं। जितने प्रमुख राजनीतिक दल है आज लगातार केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, चुनाव की तैयारियों में। अभी हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ का और दिल्ली का लड़ा, थकान भी नहीं उतरी, फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता, और बाकी राजनीतिक दल अभी पार्लियामेंट के चुनाव में व्यस्त हो गए। ये खत्म होंगे तो बंगाल के, केरल के चुनाव आ जाएंगे, वो खत्म होंगे तो पंजाब के, उत्तराखंड के चुनाव आ जाएंगे, वो खत्म होंगे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे, बिहार के चुनाव आ जाएंगे, फिर गुजरात के आएंगे, हिमाचल के आएंगे। सारे प्रमुख राजनीतिक दल 24 घंटे केवल एक काम में लगे रहते हैं, चुनाव, चुनाव और चुनाव। इस चुनाव के कारण सारा विकास अवरुद्ध होता है और राजनेताओं का एकमात्र काम ये रह गया है एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की आलोचना करना, क्योंकि चुनाव लड़ना है लगातार। इसलिए अच्छी बात किसी के बारे में हम कर ही नहीं सकते। आप किसी भी सरकार के बारे में, अगर मेरी सरकार के बारे में आप किसी कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो वो कहेगा हर मोर्चे पर विफल, और हमसे कोई पूछेगा केंद्र सरकार के क्या हाल है तो हम कहेंगे केंद्र में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। जनता जानती कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई कहीं नहीं। लेकिन हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमको लगता है कि अगर हमने कह दिया कि फलाना अच्छा काम कर रहा है तो पार्टी के लोग ही डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि मिले हुए हो, उनकी प्रशंसा और तारीफ कर रहे हैं। मैं अच्छा और तू बुरा ये कर करके एक दूसरे के चेहरे इतने दागदार हमने कर दिए हैं
कि जनता पहचानने से भी कई बार इनकार कर देती है। ये कब तक चलेगा आगे, कब तक चलेगा? कहीं नैतिकता की राजनीति, शुचिता की राजनीति, आम सहमति की राजनीति, वैमनस्य रहित राजनीति, इसके लिए भी तो कहीं कोई समय हो, लेकिन वो समय किसी के पास नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 5 साल में चुनाव होंगे तो 4.5 साल तो हम कम से कम ठीक रहेंगे। और इसलिए सारे चुनाव एक साथ हो, लोकसभा के, विधानसभा के। और एक बात की और आज आपके बीच में वकालत करना चाहता हूं, बहस हो देश में कि राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होने चाहिए। सीधी जनता चुने, जो लोकप्रिय होगा चुन के आएगा, फिर 5 साल सरकार चलाएगा। और नहीं तो 2 साल चली, 2.5 साल चली। अगर गठबंधन की बन गई तो खरीद फरोख्त हुई, बातचीत हुई, नहीं निभी तो मैं अलग और तू अलग। 96 में चुनाव, फिर 98 में चुनाव, फिर 99 में चुनाव, एक एक वोट से सरकार चली जाती। सीधे प्रधानमंत्री चुनो भाई, सीधे मुख्यमंत्री चुनो, और जो चुना जाए वो 5 साल तक फिर ठीक ढंग से सरकार चलाए। कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो तो महाभियोग जैसी व्यवस्था हो जाए। और नहीं तो लगातार मैं 3 साल भी नहीं रहा मुख्यमंत्री, और 13 बाई इलेक्शन मैंने लड़े, 13 बाई इलेक्शन, हर 4-6 महीने में एक उपचुनाव, कोड ऑफ कंडक्ट लागू, और फिर हम बाकी सब चीजें छोड़ के, क्योंकि एक चुनाव भी अगर हार गए तो मीडिया वाले कहते हैं जमीन खिसक गई, अब तो जाने वाले हैं। अब वो जमीन खिसकी ना लगे, इसलिए हम चुनाव जीतने की तैयारी लगातार करते रहते हैं। और इसलिए एक तो एक साथ चुनाव हो, और एक सीधे सीधे जनता चुन ले कि उनका नेता कौन है। ये व्यवस्था अगर लागू हो जाएगी तो मैं सचमुच कहता हूँ, अब बताइए, विधानसभा के निपटे नहीं चुनाव, लोकसभा आ गए, चंदा देने वाले भी कहाँ तक चंदा दे बेचारे, 3-3 महीने में चंदे के बिना चुनाव चलता नहीं। और इसलिए स्टेट फंडिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, ये चंदे का धंधा हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। ये भ्रष्टाचार की बुनियाद है, ये भ्रष्टाचार की जड़ है। इसको कहीं ना कहीं हमें समाप्त करना चाहिए। जितने खर्चे होते हैं चुनाव में, स्टेट फंडिंग क्यों नहीं हो सकती? किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं। जो जरूरी खर्चे होंगे वो सरकार करेगी, तब हम लोकतंत्र को पटरी पर लाने का काम कर पाएंगे। और इसलिए जो विषय था कि स्वायत्तता आवश्यक है राज्यों में ठीक ढंग से काम करने के लिए, राज्यों की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए। और मैं तो ये कहता हूं मेरे अनुभव से कि अगर ये स्वायत्तता नहीं रही, अगर राज्यों के साथ भेदभाव होता रहा, तो संघीय ढांचे को भी हम कितने समय तक बरकरार रख पाएंगे मैं नहीं कह सकता। उसको भी चोट लगेगी, उसको भी नुकसान पहुंचेगा, यह एक अपराध होगा, ये एक पाप होगा। मैं मानता हूं कि बड़ा परिपक्व लोकतंत्र है हमारे यहाँ, ये और मजबूत हो, ये और परिपक्व हो, और राज्य और केंद्र सरकारें अपना अपना काम करते हुए आगे बढ़े। शायद मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। I may be the youngest chief minister, but I represent a state and a political party that are the oldest advocates of state autonomy. We have a historical, a constitutional, and a political basis for this claim. We have special extent autonomy and a specific case for enhanced autonomy. And I believe the time has come when the original form of autonomy in J&K needs to be seen not just as an aberration or an accommodation, but it needs to be seen in the Indian federal system as a model for all other states. In other words, the autonomy envisaged for J&K could and should become the rule rather than the exception in the Indian federal system. Having said that, the larger question is there a generic case for enhancing the autonomy of Indian states? And I believe that there is. Not just to deliver change on the ground, but also to prevent the national political system from imploding. There are compelling systemic reasons to revisit the issue of autonomy of states. Two seemingly unrelated changes, liberalization and decentralization, have over the years disempowered the state governments by eroding their policy-making space. First, the economic reforms. While we recognize that the economic policy framework was radically changed in 1991, we haven't paid enough attention to how it has affected the fiscal federal setup. The framework of center-state relations that exists now was conceived, designed, and operated in the pre-liberalization era. The underlying logic of governance was control, and it was this mindset that determined the design of center-state relations. Economic reforms of 1991 changed the economic policy framework. It redefined the role and changed the mindset of governance, its instrumentalities, and the quality of intervention.
Government moved from controls to regulate. Corporate moved from protection to profits. Entrepreneurs moved from cornering capacities to competitiveness, and individuals have moved from saving to consuming. In other words, the economic logic of the nation and its constituents has changed. In all this, the underlying principle has been greater freedom to act, be it in government, corporate, or individuals. Ironically, if there is one entity that saw no loosening of controls, it was the state government. Even though it is now obvious that by assigning a greater role to market in resource allocation, the roles of different levels of government in decision-making and in the provision of public services has been altered. In the new situation, state governments have had to reorient to provide public services to cater to the diversified demand conditions prevailing in different regions and to regulate and monitor the functioning of the market. This has shifted focus of governments from direct participation and distribution activities to one of providing services. On the contrary, there was an increase in the degree of centralization, and the states have been constrained further. I'll explain how. The tax reform, which was a part of the economic reforms, like the introduction of the value-added tax system with uniformity in rates, have taken resource-raising powers away from the states. The state finance ministers can't change rates, can't alter slabs, and can't even give exemptions. They have literally become the 12th man of a cricket team. At the same time, due to two constitutional amendments, the 73rd and the 74th amendments, the long-standing two-tier federalism has been replaced by a three-tier system. In the garb of decentralization, substantial expenditure powers have been given to the local bodies, be it in primary, health, and education. Even some revenue powers, like of property tax, motor vehicle taxes, have been passed on to the third level of governance, that is the panchayats and local bodies. This has been at the expense of state governments, whose expenditure powers stand curtailed. Given the fact that most of the state sector spending is in these areas, the local bodies, municipalities, and panchayats have slowly nibbled away at the expenditure powers of the states. To add insult to injury, the union government as of late started bypassing states and giving money directly to the panchayats and local bodies and even to municipalities outside of the state budget. Increasingly, the money for national flagship schemes is now flowing directly to them, thereby taking away the allocative expenditure authority of the state governments. If state governments are made a revenue collecting agency and an expenditure disbursement division of the central government without any significant and meaningful role in either raising resources or allocating expenditure, what change can you expect a state government to bring? The fact of the matter is that with no radical restructuring of the fiscal federal setup, as should be done after the third layer was introduced, the states are caught in a pincer and a bind, with center squeezing from the top and local bodies snipping away at them from below. We are moving in a very dangerous direction, that of the disempowerment and disenfranchisement of the states. The second layer of government is being systematically eroded under the garb of decentralization. Under this kind of regime, the political system can and is likely to implode. Parallel to this economic and financial decentralization is exactly the opposite trend on the political front. In the last 2 decades or so, the nature of Indian polity has undergone a sea change. Of particular relevance in the context of the fiscal federal setup are two changes: emergence of regional parties across the country and coalition rather than one-party rule at the center. Unlike the 50s through the 70s, one party is not ruling the center as well as the states. Indeed, today it is the other extreme. Not only is there a coalition at the center, but there are different parties and coalitions ruling the center and various states. Thus, we have a divergent trend: economic centralization amidst dispersal of political power across the country in the form of regional parties. The problem, and this is the current state of play, is that once the regional parties come to power in the states, they realize that they are unable to deliver on the development front. There is very little, if any, flexibility in their economic choices. On an average, 3/4 of the state plan is predetermined, and almost 2/3 of the expenditure is predetermined as well. For the moment, a transitory compromise seems to have been made in the sense that regional parties are tying up with one or the other main national party to increase their leverage at the center. But this is not a systemic solution. The need for a systemic solution arises from the fact that under such a situation, the logic of a federation undergoes a change. In such a situation, the cooperative federal system that has been envisaged by the founding fathers of the Constitution, which has already become
competitive federalism in a negative sense and is fast heading towards coercive federalism. If the nation has to be stable and strong, this structural imbalance has to be addressed. The only way to do it is to give more autonomy to the states, which is in line with the democratic trends reflected in the growth of regional parties. The only way to ensure stability in the system is operational political decentralization. Once that is done, genuine economic decentralization will follow. What form should this autonomy take? First, the new framework of center-state relations must be designed for an open economy that is driven by private sector rather than the public sector. Economic liberalization has caused huge regional imbalances among states. Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu are getting the bulk of the private investments, while other states are not. The gap in per capita income across states is widening, but the state governments have no instrumentalities to address these or such imbalances. This means that states must have powers for independent fiscal intervention. This also means that they must have powers to raise the resources and allocate them as per their needs. The second is that states' autonomy to formulate policies in areas falling within their constitutional jurisdiction has to be complete and meaningful. For instance, taxes are shared, but the power to tax is being taken away. This has to be reversed. Similarly, in the case of borrowings and foreign exchange transactions, today individuals have more freedoms than state governments. Further, the sanctity of state taxes has to be maintained. Service tax is a classic example. All lucrative and revenue-yielding taxes are the center's prerogative. All poor country cousin taxes are given to the states. The third aspect of redesigning the fiscal federal setup is to give the state a role in the regulatory framework of the country. Assigning a greater role to the market in economic activity has necessitated diffusion of the economic power of the central government and more active participation of sub-central governments in the regulatory system. At present, all regulatory powers vest with the union. Change is the latest buzzword sweeping across countries and within our country across states. People want to see change, and they don't want to have to wait for it. States, especially locationally and infrastructurally challenged states like mine, can't deliver that quantum of change without a healthy dose of autonomy, fiscal as well as political autonomy. And so, in a nutshell, I would have to say that yes, states, in order to deliver change, must receive a healthy dose of autonomy. Thank you. My friends, Mr. Shivraj Singh Chauhan, Chief Minister of Madhya Pradesh, my young friend, Mr. Omar Abdullah, Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Prabhu Chawla, ladies and gentlemen. I'm very happy to participate in the roundtable discussions on do states need more autonomy to deliver change. I would like to congratulate the organizers of India Today for organizing conclave on the theme challenges of change. The discussion on the autonomy of states has to be seen in the context of our constitution. Article 1 of the constitution describes India as a union of states. We have a federal structure in which there are three functional areas: an exclusive area of the center, an exclusive area for the states, a common or concurrent area in which both the state and the center operate simultaneously. The scheme of the constitution is to provide for a strong center to protect the unity and integrity of the country. India has geopolitical and historical characteristics which have few parallels. Its size and population, geographical, linguistic, religious, racial, and other diversities give it the character of a subcontinent. Ensuring unity in diversity is the biggest challenge which our federal structure has to address. I would like to quote Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, chairman of the drafting committee, which, introducing the draft constitution, explained the position as follows: that though India was to be a federation, the federation was not the result of an agreement by the states to join in a federation, and that the federation not being the result of an agreement, no state has the right to secede from it. The federation is a union because it is indestructible. Though the country and the people may be divided into different states for convenience of administration, the country is one integral whole. Its people, a single people living under a single imperium derived from a single source. The Americans had to wage a civil war to establish that the states have no right of succession and their federation was indestructible. The drafting committee, though it was better to make it clear at the outset rather than to leave it to the speculation or to disputes.
Another distinctive aspect of the Indian Constitution is that it provides for a single citizenship for the whole of India. There is no dual citizenship. On the other hand, American Federation recognizes a dual citizenship. This important difference between the two countries is due to their different historical backgrounds. The framers of our Constitution made an elaborate distribution of the government powers, legislative, administrative, and financial, between the Union and the states. To make it strong, they gave weightage to the Union, allocating to it dominant and relatively larger powers, examples like defense of India, Navy, military, and Air Force, atomic energy, foreign powers, war and peace, citizenship, railways, post and telegraphs, etc. The states have provided exclusive jurisdiction in matters pertaining to public health, sanitation, local self-government, police, agriculture, animal husbandry, and local issues regarding sales tax and value-added tax. Finally, the concurrent list includes subjects like criminal laws, Indian Penal Code, criminal procedure, Code of Civil Procedure, electricity, trade and commerce, shipping and navigation. The Constitution makes a distribution of taxing powers between the Union and states. The fields of taxation have been enumerated either in the Union list or in the state list. There is no subject of taxation in the concurrent list. The Constitution recognizes that the financial resources of the states may not be adequate for discharging their onerous responsibilities. It, therefore, envisages certain tax revenues raised by the Union to be shared with the states. It provides not only for their distribution between the Union and states, but also inter se among the states on the recommendations of the Finance Commission. The Union government has taken several measures for giving greater decentralization, autonomy to the states. Example, the 73rd and 74th constitutional amendments have empowered the local self-government and institutions in a very substantial manner. It has brought about revolutionary change up to the Zilla Parishad and Gram Panchayat level. Similarly, the flagship programs of the UPA government in the fields of education, health, have accelerated the process of development and change. Some of the examples are the Sarva Shiksha Abhiyan, the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, National Rural Health Scheme, several programs of the UPA government. The Constitution is not static frame, but an organic living institution. This is particularly true of a flexible yet resilient constitution like that of India, designed to meet the needs and problems of a changing society for generations to come. Nothing less, due to the dynamic interplay of socio-economic, political, and other forces, the intent and actual working of the Constitution sometimes tend to diverge. I would like to quote some examples. The share of Maharashtra state is indivisible pool has steadily declined over the years from 14.28% given by the 4th Finance Commission. It has declined to 8.19 to 9th Finance Commission, reduced to 6.12 by 10th Finance Commission, to 4.63 by the 11th Finance Commission, 4.99 by 12th Finance Commission. Hence, Maharashtra has suggested the following criterion and weightage for the proposed devolution of funds that have been earmarked for the state out of the divisible pool. The Union government has, over the last many years, created new sources of cess and surcharges. Over and above the cess and surcharges, substantial revenue is accruing to the Union government out of the license fee and royalties that are collected from telecom licenses and for extraction of oil and mineral resources. The state government feels that a part of this income should come to the states. The state government would agree with the views of the empowered committee of state finance ministers that devolution to the states should be increased to 50%. For determining the inter se distribution of funds between the states, there is a need to increase weightage to the efficiency parameters of the states. In the present Indian economy scenario, an ethos warrants greater weightage to be afforded to the efficiency criteria. Central government should introduce rewards linked to performance against specific parameters. This would improve quality and of public expenditure to obtain better outputs and outcomes. It is therefore suggested that a separate but substantial pool of fund of say rupees 50,000 crore every year is created. This amount could be distributed on the basis of performance against the predefined efficiency parameters. Keeping in view the different stages of development in various states, the states could be divided into 3 groups. In each of these groups, a state could be compete with their peers on the basis of performance against predefined efficiency parameters to maximize their share from this earmarked fund. The state government feels the source of taxation for the states may be increased. This is essential so that states can become more self-reliant in meeting their needs. More important, this would encourage the states to be vigilant in their tax collection efforts.
While introducing the GST, instead of revenue neutral rate for both the state and central governments, the share of the state governments could be increased by at least 2% along with an equal reduction in the share of the central government to achieve this. A large number of centrally sponsored schemes have been introduced by the Government of India. Many of these are very desirable schemes and include schemes like the Sarva Shiksha Abhiyan, National Health Mission, the JNURM, the UID, SMT, housing schemes for the rural poor. So while such schemes are welcome and have been benefited the state immensely, there is a need to make such schemes flexible so the states can tailor them to suit its own local conditions. Maharashtra's coastline extends to 720 kilometers. Many of the cities, in particular Mumbai, have sea as their boundary. The CRZ notification of 1991 of the Government of India has restricted the development of these cities to a considerable extent. This difficulty is felt particularly in Mumbai, where 32% of the land comes under the CRZ zone and therefore cannot be developed to the full potential. Many important infrastructural projects are held up for want of clearances against the CRZ notification. The case of Navi Mumbai Airport is quite pertinent in this respect. Having completed all the requirements of initiating development of airport, the project is getting delayed because of the clearance of the Ministry of Environment. I feel these are some of the major issues which need more devolution of powers. The new coastal management zone revolution envisages allowing greenfield airports in coastal areas, but that is likely to take some more time for finalization. It is felt that a more autonomy should be given to the state governments to develop badly needed infrastructure by taking decisions on its own. In the states have their own safeguards for protecting the environment. The JNURM program of the Government of India is a path-breaking venture in creating infrastructure in urban areas. However, reform agenda of the JNURM has to be flexible enough to address the specific needs of an era that is insisting on area-level committees may not be a workable solution for the cities like Mumbai, Pune, etc., where a Gram Sabha approach may not work. The reform agenda should be worked out in consultation with the respective state governments and the local conditions existing. In the case of mining, I think more reforms are required where the decisions about mining leases could be taken up in time and delays are avoided. And then as per the Central Road Fund rules 2007, widening up the 2 lanes is allowed, but it is felt that it should also be incorporated the works of widening to 4 lanes for state highways passing through industrial and urban units. A number of issues which need to be tackled. Under the Environment Protection Act, also, environment clearance is granted by the Government of India for setting up of industrial projects. The states have been granted powers to issue clearances to certain categories of units. The present notification was issued in 2006. The scope of decentralization of authority for granting environment clearance by the states needs to be widened to include all the IT and ITS units. So in conclusion, I would like to conclude my opening remarks by supporting the stronger and greater role provided to the Union by our Constitution. At the same time, the difficulties, problems being experienced by the state governments in implementation of developmental activities which usher change must be solved through greater delegation of powers to the states. This is a continuous process and it is necessary to review the need for greater delegation, autonomy to the states on a regular basis. Forums like National Integration Council, Interstate Council, and regional councils should be the basis for the exercising of identifying areas for greater decentralization and autonomy on a regular basis. To summarize, I would like to say that the greater autonomy to the states is required in the areas of financial autonomy, greater flexibility in terms of development schemes, and greater discussions, consultations with the states in formation of development schemes. Thank you very much. This is a question I'm asking to 3 of you to set the ball rolling. The kind of model he's suggesting, Mr. Omar Abdullah, the kind of model he wants, it should be applicable to all the states is what he suggested. Let me clarify, if he suggests that Article 370 should be applicable to all the states, will all 3 of you agree? No, Union of India, let them answer. I'm asking them that question. Because it is Article 370 is part of Union of India. It is not out of it. Please, Mr. Ashok Shivraj, if a similar autonomy is given to you status, which Kashmir has got, will you accept it? मेरा सवाल ये है कि 370 है जो आर्टिकल, जिसके वजूद में इनको पावर मिलती है, ऑटोनॉमी मिलती है, उसी तरह की पावर अगर आपको भी दे दी जाए, तो आप 370 अपने लिए भी एप्लीकेबल करेंगे कि नहीं करेंगे? हर वो प्रावधान जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करता हो और
राज्यों के साथ समान व्यवहार न करता हो, मैं विरोधी हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लिए ही क्यों न मिले। नहीं सर, सवाल आपने डॉज कर दिया मेरा। एनीवे, अशोक जी। I think Kashmir's case is different. The Article 317, I think we go by the constitution of the state, which has laid down clear parameters of what are the rights of the states. I think Kashmir was a different case altogether, and autonomy to the Kashmir on certain issues has been granted. And I think the present system is absolutely okay. Within the I think with the changing scenario, autonomy, as I said, Finance Commission, as a devolution of powers in terms of, I am more concentrating on the development of the states depends upon how much financial resources are available to the state. And the Finance Commission allocations coming down year after year, I think we are more interested on this. Maharashtra itself or other states, other than Kashmir, I think the present constitutional provisions are quite sufficient to take care of the autonomy.